Question number 8. The cost and selling prices per unit of two products manufactured by a company are as under. A और B दोनों से related हमें पूरा cost structure दिया हुआ है. The selling price, variable cost which is direct material at rupees 25 per kg. So we can also find the quantity consumed. Rate is given as 25 per kg. A में लग रहा है 100, B में भी 100. That means for both of them we need 4 kgs of raw material per unit. Then direct labor at rupees 20 per hour, तो हम labor hours भी find कर सकते हैं. A बनाने के लिए लग रहे होंगे 4 hours और B बनाने के लिए लग रहे होंगे 2 hours. Painting at rupees 30 per hour, painting hours भी हम find कर सकते हैं. For A it should be 1 and for B it should be 2. Variable overhead, fixed overhead at rupees 17.5 per direct labor hour. So we can calculate the total fixed overheads. ऊपर से हम labor hours find करेंगे and then we can find the total fixed overheads. Then profits. In any month, the maximum availability of inputs is limited to the following. Direct material 480 kgs, direct labor hours 400 hours and painting hours are 200. This is the maximum availability. मतलब ये हमारे constraints हैं. Formulate a linear program to determine the production plan which maximizes the profits by using graphical approach. Graphical approach use करके आपको solve करना है profit maximization वाला linear program. State the optimal product mix and monthly profit derived from your solution in one above. आपको product mix बताना है, ऑप्टिमल और मंथली प्रॉफिट जो आपने फर्स्ट वाला ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकाला उस सॉल्यूशन का रिस्पेक्टिव आपका प्रॉफिट कितना होगा. तो जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे जिनसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा होगा उन कोऑर्डिनेट्स पे हमारा प्रॉफिट मतलब z फंक्शन कितना हो जाएगा. देन इफ द कंपनी कैन सेल द पेंटिंग टाइम एट ₹40 per hour as a separate service, show that modification will be required in the formulation of the linear programming problem. अगर कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो पेंटिंग टाइम को 40 पर आवर पे सेल आउट कर सकता है, अगर वो चाहे तो पेंटिंग को वो प्रोडक्शन में यूज़ करने की जगह डायरेक्टली सेल करके 40 रुपीज़ इट कैन अर्न. सो यू हैव टू मॉडिफाई द लीनियर प्रोग्राम अकॉर्डिंगली. You are required to reformulate the problem but not solve. सिर्फ problem को आपको reformulate करना है. Formulation आपने कर लिया? LPP formulation हो गया? क्या होगा LPP? Objective is to maximize Z. 30A plus 40B. This is the profit figures. No. Wrong. The profit which has been calculated is after taking into consideration fixed cost of 70 rupees and 35 rupees. Is fixed cost variable? Unit wise change होता है क्या? तो fixed cost तो total उतना ही रहेगा ना. ऐसा नहीं है कि आप जितने यूनिट्स बना रहे हो उतने यूनिट्स के हिसाब से 70A लगेगा और 35B लगेगा. आपको दिया हुआ है दोनों प्रोडक्ट्स A और B का आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, आपको वेरिएबल कॉस्ट दिया है. सो यू कैन फाइंड आउट द कंट्रीब्यूशन. सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 500 and 450 minus variable cost per unit which is 100 plus 80 plus 30 plus 190 400 and 100 plus 40 plus 60 plus 175 375. So we have contribution per unit as 100 and 75. These are the contributions per unit. Okay? आपको बोला है objective should be profit maximization. Contribution
पर यूनिट में से यू कैन नॉट डिडक्ट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, आपको टोटल कंट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स कॉस्ट रिड्यूस करके प्रॉफिट डिराइव करना होता है। ओके, टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे मिलेगा? तो फिक्स कॉस्ट बोला गया है 17.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर। आपको लेबर आवर्स दिए ना नीचे, देयर आर 400 लेबर आवर्स, सो वी कैन कैलकुलेट द टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल fixed cost should be 17.5 into 400, that is 7,000. So your objective will be maximize Z is equal to 100A plus 75B, which is the total contribution, minus 7,000, the fixed cost. आया समझ में? सब्जेक्ट टू बोलिए कॉन्स्टेंट्स। 4A plus 4B should be less than equal to 480. This is the raw material availability. Next, 4A plus 2B should be less than equal to 400. This 4A plus 2B, this should be less than equal to 400. This is the direct labor hours availability. Next, A plus 2B, this should be less than equal to 200. Painting hours availability. और कुछ? वेरिएबल ओवरहेड्स के अलग से होते हैं क्या? आज जितने आज काम होगा उसके हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड्स लगेंगे। So these are the three constraints. Then A and B should be greater than equal to 0. ये हो गया आपका LPP. Now we have to solve this LPP on graphical method. Graphical method से हमें LPP solve करना है. So again we'll decide the coordinates. We can number them as 1, 2, 3. Constraint and coordinates. First constraint, which is 4A plus 4B is less than equal to 480, या फिर हम इसको बोल सकते हैं A plus B is less than equal to 120. इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 120 and 120, 0. अगर A को 0 रखेंगे तो B हो जाएगा 120, B को 0 रखेंगे तो A हो जाएगा 120. Second constraint is 4A plus 2B is less than equal to 400 or 2A plus B is less than equal to 200. So coordinates will be if A is 0, B is 200. If B is 0, A is 100. Third one is A plus 2B is less than equal to 200. So if A is 0, B will be 100. If B is 0, A will be 200. Drawing this on the graph.
अगेन यू कैन डिसाइड अ स्केल ऑन योर ओन. आप 20-20 करके भी स्केल ले सकते हो, 50 ले सकते हो, 30 ले सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल हो यू कैन टेक दैट स्केल. मैक्सिमम हमें x का भी 200 चाहिए और y का भी 200. दोनों केस में हमें 200 मैक्सिमम चाहिए. इफ वी टेक इट एज 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 and 200. फर्स्ट इन इक्वेशन अगर हम देखें तो फर्स्ट का कोऑर्डिनेट इज 0 and 120. x is 0, y is 120 and y is 0, x is 120. Second में we have 0 and 200 and 100 and 0. Third is 0 and 100 and 200 and 0. All the equations are less than equal to. Less than है मतलब left side and down side. तो तीनों को जो satisfy करे that should be this region. ये वो रीजन होना चाहिए जिसमें हमारी तीनों इनइक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती हैं. ऑल द कॉन्स्टेंट्स आर सेटिस्फाइड. इसके जो भी कॉर्नर्स होंगे हर एक पे वी विल वर्क आउट एग्जैक्टली क्या आ रहे हैं ये कॉर्नर्स. ये दोनों बताना क्या आ रहा है. This one is 40-80 and this one is 80-40. Keeping these values in the objective function, we'll get profit. Objective function is 100a plus 75b minus 7000. ये values अगर रखें तो ये हो जाएगा 0 into 100 plus 100 into 75 minus 7000, which will be 500. Then 0 into 100 plus 0 into 75 minus 7000, so loss of 7000. 100 into 100
plus 0 into 75 minus 7,000, 3,000, 40 into 100 plus 80 into 75 minus 7,000. Then 80 into 100 plus 40 into 75 minus 7,000. ये सही है? So the maximum profit we are getting at this level. So the solution is sell 80 units of A, sell or produce जो भी पूछा है, and 40 units of B. क्या? यहाँ तक कोई डाउट? सेकेंड पॉइंट में हमसे यही पूछा था, ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स। ये हो गया हमारा ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स, ये हमने इधर लिख दिया। एंड मंथली प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम योर सोल्यूशन, प्रॉफिट फ्रॉम ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स विल बी, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट, 4,000 रुपीज। थर्ड में अब बोला है अगर कंपनी पेंटिंग टाइम को 40 रुपीज़ पर आवर पे सेल कर सकता है, इफ़ दे हैव एन ऑप्शन दैट दे कैन सेल दी पेंटिंग टाइम एट 40 रुपीज़ पर आवर। अब नया एलपीपी आपको फ्रेम करना है, ओनली फॉर्मुलेशन मॉडिफाई करना है आपको एलपीपी। व्हेन दे हैव एन ऑप्शन, दे हैव एन ऑल्टरनेटिव कि वो पेंटिंग टाइम को सेल कर सकते हैं। So production of product A और B both will give an opportunity cost. A या B के प्रोडक्शन करने की वजह से they are not able to sell the painting time, जिससे उन्हें कुछ opportunity cost लगेगा। ओके, opportunity cost से उनका profit reduce हो जाएगा। ये समझ में आया? So now let's find the revised contributions per unit. सेलिंग प्राइस पर यूनिट अभी भी इतना ही होगा, 500 and 450 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, द ओरिजिनल वेरिएबल कॉस्ट विच वर 400 and 375। इसके अलावा वी विल नाउ ऑल्सो हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। प्रोडक्ट ए बनाने में हम 1 घंटा पेंटिंग टाइम यूज कर रहे हैं। अगर हम प्रोडक्ट ए बनाते हैं तो हम वो 1 घंटा नहीं सेल कर पा रहे, तो वी विल हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 आवर। कितना होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? तो अगर हम उसको सेल आउट करते हैं हमें रिवेन्यू मिलता है 40 रुपीज़, एंड एवरी आवर इन विच वी आर डूइंग द पेंटिंग वर्क हमें कॉस्ट लगता है 30 रुपीज़। अब हम क्या कर रहे हैं, पेंटिंग अपने प्रोडक्ट के लिए नहीं करके किसी और के लिए कर रहे हैं, पर जो कॉस्ट लगेगा वो तो उतना ही रहेगा, 30 रुपीज़। सो दैट मीन्स नेट
10 रुपीज़ का बेनिफिट हमें मिल सकता है इफ़ वी आर सेलिंग दिस पेंटिंग टाइम. नाउ वी आर फॉरगोइंग दैट बेनिफिट. 10 रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन हम फॉरगो कर रहे हैं तो वही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ. पर आवर इट इज़ 10 रुपीज़ और यहाँ पर एक ही घंटा लग रहा है, सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी 10 ओनली. मतलब इसका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा 90. फॉर बी हमें पेंटिंग के लग रहे हैं 2 आवर्स. 2 आवर्स ऑफ पेंटिंग आर नीडेड फॉर बी. 2 घंटे में वी कैन अर्न 80 रुपीज़ एंड वी विल इनकर अ कॉस्ट ऑफ 60 रुपीज़. मतलब हमें कॉन्ट्रीब्यूशन मिल सकता है 20 रुपीज़ का, विच वी आर फॉरगोइंग एंड प्रोड्यूसिंग बी. 20 रुपीज़ विल बी अवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. 10 रुपीज़ पर आवर, 20 रुपीज़ फॉर 2 आवर्स. पहले क्या बोला था आपने इसके बारे में? ये भी नहीं समझ में आया. वो कैलकुलेशन तो समझा कि 40-30. सो इफ़ दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग दीज प्रोडक्ट्स, ए और बी अगर नहीं बनाते हैं, वो पेंटिंग टाइम को एज इट इज़ अभी सेल कर सकते हैं. ओके क्योंकि वो ए बना रहे हैं तो दे आर नॉट सेलिंग दैट पेंटिंग टाइम, तो उससे मिलने वाला कॉन्ट्रीब्यूशन दे आर फॉरगोइंग. अगर ए बनाते तो 1 घंटा उनका बचता जिसको वो सेल कर सकते थे, ए नहीं बना के. अब वो ए बना रहे हैं तो वो 1 घंटा वो सेल नहीं कर पा रहे, 1 घंटे का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बी में 2 घंटे होते हैं तो 2 घंटे का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो वी हैव contribution per unit, revised contribution per unit as 90 and 55. Any doubts in this? So now fixed cost तो same ही रहेगा, fixed cost में तो कोई change नहीं आएगा. So we can say the revised LPP will be objective to maximize Z, which is equal to 90A plus 55B minus 7000. Subject to constraints भी same रहेंगे, availability and all they have not changed, so we have the same constraints. 4A plus 4B is less than equal to 480. 4A plus 2B is less than equal to 400. A plus 2B is less than equal to 200 and AB are greater than equal to 0. So this is the revised LPP. Then read question number 9th, ये solve करके again 9th का भी formulate LPP.